Hello students, today we will discuss about the poem Fire and Ice written by Robert Frost. Now this poem students have to study in class 10. So this is a very short poem written by Robert Frost. Now look at the poem. Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and would suffice. Now, here in this very short poem, now before we go in deep details for the poem, let us first discuss about the rhyme scheme of this poem. Now, look at the rhyme scheme. Fire, desire. So, A. Then ice, B. So it is A, B, A. Again fire. So it's the same A. Now twice, ice and twice. So it will be B. And then hate. Hate is a new rhyme. So it is C. And then again ice. Twice and ice. So it will become B. And then great. Hate and great. So it is C. And ice twice, it is B. Clear? So this is what the rhyme scheme of the poem, that is A, B, A, then again A, B, C, then B, C, B. So this is the rhyme scheme of this poem, 9 lines poem. Now let us come to the poem. So in this poem, the poet Robert Frost, he talks about the fact of the end of the world, end of the world or earth. Here the poet talks about that how the world is going to meet its end. So in science, the scientists, they have given two concepts about the end of the world. First is global warming. Scientists say that the global warming will result to an end of this earth or world. And flood. Due to global warming, all the ice will melt and it will result in a great flood that will ultimately bring an end to this world. Now here the poet, he talks in literary term. Instead of mentioning a global warming, he says desire. He mentions desire and flood, hate. Clear? So Robert Frost, he uses two literary words, that is the desire and hate. He says that the world will end due to desire and hate. We could relate both the terms, global warming and desire. They both are related, because how global warming will come, the desire, the intense growing desire of the people will lead to global warming. Clear? So this is how the poet here relates in this poem, Fire and Ice. So fire and ice, okay, and ice. Now hate. The poet here hate, instead of mentioning flood, the poet mentions hate or ice. Clear? So desire acts like fire. Fires once ignited, एक बार अगर आप आग जला दो तो it keeps on growing and growing. In the same way is the desire. अगर आपकी desire कभी ख़त्म नहीं होती, हमारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, कभी भी it never comes to an end, it never ends. Similarly hate जो है वो ice के समान होते हैं. Clear? It is present there and hate acts as ice. How? Let us see in this poem. Now see the first stanza. Some say the world will end in fire. Clear? Some say in ice. Now the poet in the first two lines, he says that some say the world will end in fire. कुछ लोग ये कहते हैं कि world जो है वो
फायर से एंड होगा. हियर द वर्ड फायर इज डिजायर. क्लियर. पोएट डिजायर ना कह के उसके जगह पोएट ने फायर वर्ड का यूज किया है. एक्चुअली पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं डिजायर. कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य की जो ग्रोइंग डिजायर है, इच्छाएं, बढ़ती इच्छाएं हैं, दैट विल रिजल्ट टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. एंड सम से इन आइस. और कुछ लोग ये कहते हैं कि पृथ्वी के एंड का कारण आइस होगा. द ग्रेट ग्लेशियर्स वो मेल्ट करेंगे और वो फ्लड आएगा और जिसकी वजह से पृथ्वी एंड कर जाएंगे. बट हियर इन द थर्ड लाइन द पोएट सेज फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर. लेकिन पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, व्हाट आई नो ऑफ डिजायर, मुझे डिजायर के बारे में जितना पता है, जिस तेजी से लोगों की डिजायर बढ़ती जाती है, और ये डिजायर ही है जो मनुष्य द ग्रोइंग डिजायर ऑफ ए ह्यूमन बींग्स कि हम रोज तरक्की करते जा रहे हैं, फैक्ट्रीज बढ़ा रहे हैं, पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं. एवरीथिंग इज ड्यू टू डिजायर, इंटेंस ग्रोइंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स. क्लियर. तो पोएट कहते हैं जहाँ तक कि मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, व्हाट आई नो ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. तो डिज़ायर के बारे में मुझे जानने के बाद, जहाँ तक मैं डिज़ायर के बारे में जानता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस वजह से मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ जो इसके साथ खड़े होते हैं, जो ये कहते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी डिज़ायर से होगा. मनुष्य की बढ़ती इच्छा जो है वही दुनिया के अंत का कारण बनेगी. द इंटेंस ग्रोइंग डिजायर ऑफ ह्यूमन बींग्स विल लेड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. नाउ ग्लोबल वार्मिंग भी इसी वजह से होता है. हमारी इच्छाएं जो बढ़ रही हैं और इस इच्छाओं को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज बैठाए जाते हैं, कारखाने बैठाए जाते हैं, एंड दिस ऑल लेड टू इंटेंस पोल्यूशन एंड दैट इन टर्न लेड टू ग्लोबल वार्मिंग. तो पोएट कहते हैं कि मनुष्य का जो डिज़ायर है, ग्रोइंग डिज़ायर, दैट विल लेड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो ये वो फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं. नाउ कम टू सेकंड स्टेंजा. नाउ पोएट कहते हैं कि अगर डिज़ायर से, ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी बच भी जाए, सपोज दैट अगर डिज़ायर से नहीं मतलब अगर एक दोबारा से पृथ्वी को मौका मिल जाए और डिज़ायर में पूर्ण रूप में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ पृथ्वी का, तो द सेकेंड कॉज विल बी हेट्रेड, वार. आदमी एक दूसरे से लड़ के मर जाएंगे. क्लियर. क्योंकि एंड ऑफ द वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसमें एक तो ग्लोबल वार्मिंग है ही, पोल्यूशन है ही, दूसरा कॉन्सेप्ट ये भी आता है कि वॉर. आज हर देश के पास अलग अलग वेपन है, अलग अलग हथियार है, जिसकी वजह से इतनी घातक हथियार है कि लोग कहते हैं कि एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा जिसमें दैट विल लेड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड. नाउ उसी बात को पोएट यहाँ पे इस सेकंड स्टैंजा में पोएट लिखते हैं, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मींस डिस्ट्रॉय, अगर पृथ्वी को दोबारा मौका मिले डिस्ट्रॉय होने का, मतलब अगर फर्स्ट टाइम वो बच भी जाता है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट. पोएट कहते हैं मैं जानता हूँ कि इस पृथ्वी पे है, ऑन दिस अर्थ, ऑन दिस प्लेनेट, देयर इज एनफ हेट and it could easily lead to the end of the earth. To say that for destruction ice is also great and hate acts as ice. क्या, जिस प्रकार से बॉडी पे एक आइस डाल दो और बॉडी का वो पोर्शन जो है वो नम हो जाता है, वो सेंसलेस हो जाता है, इन द सेम वे हेट हमारे अंदर अगर एक बार डेवलप हो जाए तो वो हमारे फीलिंग्स को सेंसलेस कर देता है. फिर हमें पता नहीं चलता कि वो कौन, वो हमारा भाई है, हमारे दोस्त हैं, दिस है, दैट है. वी यूज टू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, वी ओनली रिमेंबर आवर हेट्रेड. हम अपनी नफरत को याद रखते हैं. So this ice is also great for the destruction of the world and would suffice means sufficient. ये जो ice है ये काफ़ी sufficient है. hatred जो है इस विशाल huge world को destroy करने के लिए काफ़ी sufficient है. So that's all about this poem, Fire and Ice. So for any confusion you can write it in the comment box. Thank you.